Am I audible now? So good morning, everyone. It's a pleasure to welcome all of you to this AI Innovate event, where we are about to unravel the power of prompts and explore ways by which we can increase our efficiency through AI tools. I am Bharat Joshi, and I will be your host as we embark on this exciting journey. So let me give a quick introduction of our team. Srishal. Second slide. Hello everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Hello everyone. This is Srishal. I'm the chairperson of IEEE CIS GHRCE SBC, and today I'm here as a speaker as well for the AI Innovate, where we'll be unleashing the power of AI powered prompts. Thank you. Srishal, can you please share the PPT? Sure. Second slide. So this is our team where we have core team members, execom members, and volunteers who are making this event happen. So I want to give a quick introduction of IEEE CIS. So IEEE CIS stands for uh, Computational Intelligence Society. Share third slide. So yes, IEEE CIS, IEEE Computational Intelligence Society is a professional society of IEEE focusing on theory, design, application, and development of biologically and linguistically motivated neural networks. Connectionist system, genetic algorithms, evolutionary programming, fuzzy system, and hybrid intelligence system, in which these paradigms are contained. Um, Now, as we gather here today for this event, let us express our gratitude to our eminent mentors who continue to inspire and guide the next generation of innovators. Dr. Sachin Untawale sir, the visionary leader and director of GHRCE College of Engineering. Also, we have Thomas ma'am, who is chapter advisor of IEEE Computational Intelligence Society, GHRC. So I want to hand over now to Tanmay. So he will continue from here. Tanmay. Good morning, all tech enthusiasts. I am Tanmay Devdhari and here to introduce the Discord server of IEEE CIS SBC. So, first of all, I have shared a Discord link or a chat box. Please go to there and you will connect with our Discord server. I want everyone to join the Discord server where regular updates will be given here. Okay, so in the Discord server, we have 4 channels right over here.
So in the AI Innovate, what I want you all to drop like our introduction. So here, like I have dropped my introduction here, like a small description and our LinkedIn ID. If you have any questions regarding anything, you want to ask anything to our speaker as well, you can drop it here and we will get back to you on your question. Then we have the announcement. If we have any coming event, you can drop it here. Okay. Then we have a resources section. So we have like a set of 10 different what I can say like PDFs and cheat sheets and all for you guys, which were like specifically selected regarding the fields of machine learning, prompt engineering, and other parts, programming as well. That will be dropped in the resources section after the event within a few hours. So I want you all to join the Discord server. Okay. Bharat, I want you to please continue. Okay. So let's start. Today we have with us distinguished speaker Srishal Mungse, who will be sharing his valuable insight and expertise on this subject. But before we dive into the technicalities, let me give you a quick overview of what we are here to discover. So in this event, we will unravel the mysteries behind prompt engineering, understanding how the language we use can significantly impact the performance of AI systems. Our speaker will guide us through practical tips and strategies, making this complex topic easy to everyone. So whether you are a pro in this AI world or just getting started, this event will be going to help you. I want everyone to participate actively, share your thoughts in the chat box, ask questions, and connect with each other. So without any further delay, let's give a warm welcome to our esteemed speaker, Srishal Mungse, to share his expertise on the art of prompt engineering. Srishal, over to you. Thank you so much, Varad, and the entire team of IEEE CIS for giving me a chance to be as a speaker over here. And today, firstly, I would like to welcome all the audience, those who took time to register and came here to learn the prompt engineering and to master the art of writing the AI powered prompts. So I'll share something first. Is it visible, right? Yes, it is visible. Yes. So firstly, we'll discuss what things we are going to do today, right? Introduction. In introduction, we will see what is prompt basically and why the prompt is required. Prompt, again, the prompt is a simple statement which connects an AI model with a human, right? We need both inputs. We need two inputs so that we get a desired output. In prompts, again, we'll see what are prompts and what are the quality prompts. We'll see the difference and contrast between both of them. Why quality prompts are required in today's AI world and not the simple sentences which everyone can write. So that the value of prompt engineers has been increased due to this quality prompts of content. Then there is we'll discuss some key points and some insights about prompt engineering. What basically is a prompt engineering? We'll not go depth of it that what is prompt engineering and all. We'll just as it is a workshop type of session, so we'll work on prompts and how to create it, how to frame those prompts, how can we craft a good prompts. We'll look over on dot contents. Then there is a something I'll share which I have named here as a secret formula. Why it is a secret, you will know. You later on stay tuned with us. You'll get to know that why it is a secret. Basically, I have shared a formula where some components have been break down and the addition of all those components will give you a very enhanced prompt which can get you a desired output. Then we'll discuss the process, how the prompting procedure works, so that if we go step by step while prompting any prompt or while constructing it, while crafting it,
if we follow the process, we will get a perfect results. We'll discuss some types of prompts, situation wise, what prompts we need. There are sometimes we need a simple task. We have to perform a simple task. So we can just write a sentence which will be only a prompt. We can work with only a prompt. Where whereas when there are multitasks, we need 2 to 3 outputs in a single context. So at that time, we required some quality prompts. We need some steps in that prompts. We have to combine 2 to 3 simple prompts together so that it form a quality prompt. Then we'll conclude with some different AI tools as well, like forming designs through prompts. We'll discuss some AI tools, 2 or 3 AI tools, which if we get time, we can discuss more. So I think firstly we should start now. We'll discuss the prompt engineering, right? Now say what is prompt engineering? What basic function of a prompt engineering is? Function of prompt engineering is to bridge the gap between the user and the large language models. As we know that सभी को पता है कि chat GPT or any AI model which is powered by GPT 3.5 or 4 or any like perplexity.chat, we'll use that too also here. Claude AI, whether it be Bard or whether it be a chat GPT. Uh, Basic function of prompt engineering and why prompt engineering is in trend or why is it going to rule the AI world in upcoming years is the only reason that it bridges the gap between we are the users, and with the large language models. Like you are giving an input through a quality prompt to a large language model, so that if we give a quality prompt, the large language model or chat GPT, we can say basically for a simpler understanding, is able to understand your content, or it is able to understand that what thing you are required. Now, what are practices for designing the effective prompts? Firstly, these are all basics. So I'll just state you and I'll explain you very depth. See, assigning the role. What is assigning the role? Whenever you need a task, whenever you need to perform a task, you always need to assign a role to that particular large language model. We always write if we give like for example, I'll give an example that if you need a height plan, if you are a 10-year-old boy or a 12-year-old boy and you need a plan for height, अगर आपको basically मतलब एक 10 या 12 साल का बच्चा है, उसको अपनी हाइट बढ़ानी है and he is going to the large language model या फिर chat GPT को जाता है and he is writing that give me a plan to increase my height. बस इतना देता है. But if he is not giving a specific details, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये नहीं पता है एक्चुअली, या फिर चैट जीपीटी को ये नहीं पता होता है यहाँ पे कि हाउ ही नीड टू एक्ट. तो पहले अगर आप चैट जीपीटी को या फिर कोई भी एआई मॉडल को अगर एक रोल दे देते हो कि यू हैव टू एक्ट लाइक एक्स वाई जेड, सो ही नो कि मुझे एक्चुअली स्पेसिफिकली काम क्या करना है. जैसे आई हैव रिटन हियर assigning the role, that is what it is. Imagine you are a business development expert. अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट, इसे हमने बता दिया कि चैट जीपीटी को हमने बता दिया कि यू आर अ बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट इन सप्लाई चेन विथ और 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन XYZ फील्ड. अब इसको स्पेसिफिक और कर दिया कि बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट है. चैट जीपीटी को हमने बोल दिया कि तू बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट है सप्लाई चेन के डोमेन में. तो उसको पता चल गया कि अभी मुझे सप्लाई चेन के डोमेन में जो वर्क लगता है उसका मुझे पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए और उसी में मैं अपना रिसर्च करूंगा एज इट इज एआई सर्च इंजन, राइट. तो वही मेरा जो एग्जांपल था हाइट का, उसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे कि एक्ट लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट और एक्ट लाइक हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट. ऐसा अगर हम कर देते हैं तो उसका आउटपुट अच्छा आता है. हम अभी देखते हैं इसको लाइक इन चैट जीपीटी विल सी. Is it visible properly?
Hello, anybody please? Is it visible? Yes, yes. Yes. Thank you. Give me a right. Like see, अभी मैंने यहाँ लिख दिया कि give me a height increase plan for 10-year-old boy. Now it is giving me only simple steps जो कि तुमको गूगल में मिल जाएंगे. फिर एआई सर्च इंजन या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल होने का फायदा क्या है? तो अभी इसको अगर हम स्पेसिफिकली ज्यादा चीजें इसको बताते हैं तो इट विल गिव अ डिजायर्ड आउटपुट. Now see, now we'll reframe that prompt. This is basically a prompt. Now we will give him some specific details. And we'll put now we'll give like act like a health and fitness expert and give me अब और स्पेसिफिक हो जाएंगे हम. गिव मी अ 3 months 3 months plan for increasing my height. ठीक है. नाउ वी हैव टू टेल हिम अपना एज. जैसे ऊपर बताया था, डायरेक्ट बताया था, अभी बताएंगे. आई एम 12 years old. ठीक है, ये बता दिया. जितनी स्पेसिफिकली हम बेसिकली मेरा कहना ही है कि if we have to bridge the gap, like in prompt engineering, it bridge the gap between end user and the large language model. तो इसमें जितनी स्पेसिफिकली हम डिटेल्स देंगे उतना वो डिजायर्ड हमको आउटपुट देगा. So always remember to give as much as detail. Always remember to feed your AI. जितना तुम खिलाओगे AI को उतना वो अच्छा आउटपुट देगा. तो अभी मैंने लिख दिया एक्ट लाइक अ हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट एंड गिव मी अ 3 months प्लान फॉर इंक्रीजिंग माय हाइट. स्पेसिफिक होगा. अब आई एम 12 years old बॉय, ये भी बता दिया. अभी मुझे चाहिए 3 months का प्लान. आई नीड 3 months. अभी 3 months प्लान लिखने से अच्छा अगर हम और लिखे उसको 3 months स्ट्रक्चर्ड प्लान, तो यू विल गेट मोर डिजायर्ड आउटपुट. अगर ये तुमको ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर्ड लिखने से कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो एक बार लिख के देखना कभी. I would suggest everyone to take your laptop और मतलब साइड में टैब खुला रखो ताकि अगर मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ तो तुम लोग भी वहां पे उस चीज को चालू रखो. ठीक है. आई नीड अ 3 months स्ट्रक्चर्ड प्लान. ठीक है. रिमेम्बर. और अगर ठीक है इसको बाद में करते हैं, अभी इतना हो गया. अभी मैं जाता हूँ इसमें. ठीक है. इट इज गिविंग मी अ स्ट्रक्चर्ड प्लान. यहाँ पे इसने क्या दिया था? यहाँ पे इसने बस मेरे को बता दिया था न्यूट्रिशन करना है, यू हैव टू टेक स्लीप, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, प्रैक्टिस पोस्चर, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप. अब ये चीजें बता दी, लेकिन ये कब क्या करना है ये इसने बताया नहीं था. ठीक है. इसको और स्पेसिफिक होगा. हाँ, जब एक और चीज, जब तुम उसको बोलते हो कि एक्ट लाइक अ हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट, एक्ट लाइक अ बिजनेस एनालिस्ट, हर बार हम तुमको ये जब जवाब देगा वो कि मैं एक्चुअली कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट दैट इज अ वर्क ऑफ एआई. लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट आता है वो ऑलवेज दैट वुड ऑलवेज बी बेटर. जैसे यहाँ पे देख रहा है, देखो अभी मंथ 1 में इसने बता दिया कि लाइक फर्स्ट फोकस ऑन द न्यूट्रिशन. हाइड्रेशन यहाँ मिसिंग था ऊपर, उसने हाइड्रेशन को ला दिया यहाँ पे. स्लीप विल ऑलवेज बी कॉमन. स्लीप पोस्चर एक्सरसाइज उसने दिया था, बट उसने ये नहीं बताया था कि कौन से मंथ में किस चीज पे ज्यादा फोकस करना. अब फोकस और एक्सरसाइज ये पॉइंट ऊपर दिया था, लेकिन नीचे इसने क्या दिया एक्चुअली, योगा को ऐड किया है, बेसिक ट्रेनिंग्स को ऐड किया है, आउटडोर एक्टिविटीज को ऐड किया है, और सेकंड मंथ में इस चीज पे फोकस देना है ये भी ऐड किया है. राइट. नाउ ऊपर सिर्फ लिखा गया था कि यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, और ये लिखा गया था कि डू रेगुलर हेल्थ चेकअप.
अब यहाँ पे जो लास्ट मंथ है इसमें इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि हमको हमारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है जो हमने 2 महीने में मेहनत की। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, बेसिक एग्जाम्पल सारा। अभी हम और सामने जाते हैं इसके। Introduction. What are AI prompts? Basically, prompts क्या है? Now, AI prompts facilitate and streamline communications between human language and AI models by reducing repetitive explanations and quick information retrievals from large datasets. ये तो हो गया सब dummy वाला PPT kind of content, right? अब इसमें एक्चुअल में क्या समझा ये मैं बताता हूँ। AI prompts का एक्चुअल काम क्या है? AI prompts का काम है कम्युनिकेशन बिल्डअप करना एक यूजर और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बीच में, सो दैट कोई लार्ज डेटा सेट्स में से एआई सर्च इंजन का काम होता है उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करके लाना और वो तुम्हारे सामने रखना, तुम्हारे आउटपुट में वो चीजों को रखना। दैट इज व्हाट इज अ वर्क ऑफ एआई सर्च इंजन और अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जितना स्पेसिफिक उतना अच्छा आउटपुट, राइट। एआई प्रॉम्प्ट्स फैसिलिटेट एंड स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज। अब समझ में आ रहा है कि एआई प्रॉम्प्ट्स का काम है कम्युनिकेशंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एआई मॉडल्स। अब ह्यूमन लैंग्वेज हम तो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गिव मी अ प्लान फॉर हाइट इंक्रीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है राइट। और एआई मॉडल्स को इस चीज को दे रहे हैं, लेकिन एआई मॉडल्स उसको एज अ प्रॉम्प्ट लेता है और जितना स्पेसिफिक वहां पे हम जो कीवर्ड यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोस कीवर्ड्स व्हाट द एलएलएम डज, द लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्राइज टू सर्च इंफॉर्मेशन लार्ज डेटा सेट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो उसके बेसिस पे हमको वो डिजायर्ड आउटपुट हमको देता है। अब ये जब स्पेसिफिक हम सादा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कोई भी सिंपल प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा है हाइट इंक्रीमेंट। Quality AI prompt on the other hand, what is a quality AI prompt? A quality AI prompt on the other hand bridges the gap between user intent and the AI comprehension. बेसिकली क्वालिटी एआई प्रॉम्प्ट में यूजर का इंटेंट काफी क्लियर होना चाहिए, मोर स्पेसिफिक। क्वालिटी एआई प्रॉम्प्ट इज मोर स्पेसिफिक। एज वी हैव डन, 2 प्रॉम्प्ट लिए थे हमने, एक था हाइट इंक्रीमेंट के लिए और एक इसमें हमने बेसिकली स्टेट कर दिया था कि आई नीड अ 3 months प्लान एंड आई नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। आई एम अ 12-year-old बॉय एंड एक्ट लाइक अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट। ये चारों चीजें स्पेसिफिक कर, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हम स्पेसिफिक करते जाएंगे उतना हमारा प्रॉम्प्ट जो है उसका क्राफ्टिंग बेटर होगा, बेटर प्रॉम्प्ट निकल के आएगा बाहर, राइट। अब यहाँ पे जैसे आई हैव रिटन की इट फ्रेम्स थिंग्स इन अ वे दैट एआई कैन अंडरस्टैंड। बेसिकली ऊपर अगर हम लिख देंगे, सिर्फ हम अगर कंटेक्स्ट लिखे एआई में तो एआई का कुछ नहीं समझता है। आस्क और कंटेक्स्ट को मिला के एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना पड़ता है। अब मैं उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। विल चेक एग्जांपल अकॉर्डिंगली एज वेल। यहाँ पे हम लिखते हैं कि आई एम अ 60 kg मेल। अब इतना लिख दिया मैंने, ये मैंने कंटेक्स्ट दे दिया। एक मिनट, इसने कंटेक्स्ट ऊपर से लिया है, सॉरी एक मिनट, इसको इसको परप्लेक्सिटी में पेश करते हैं ताकि हमने यहाँ पे कुछ नया किया नहीं है। चैट परप्लेक्सिटी में आते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे अगर हम डालेंगे कि आई एम अ 60 kg मेल, एज अ 60 kg मेल, इसने 60 kg मेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब इससे हमको ये चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए, क्वालिटी है प्रॉब्लम, ये होगा कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट देने से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। जब हम कंटेक्स्ट को टास्क के साथ मिलाते हैं, कंटेक्स्ट प्लस टास्क, दैट विल गिव आवर डिजायर्ड आउटपुट, नॉट एक्चुअल डिजायर्ड आउटपुट बट एक आउटपुट मिलेगा स्टार्टिंग में। कंटेक्स्ट है, अब यहाँ लिखेंगे हम आई एम अ 60 kg मेल डिजाइन अ प्रॉपर डाइट प्लान फॉर मी। यहाँ पे मैंने उसको बताया नहीं मेरे को वेट बढ़ाना है, वेट लॉस करना है।
इसने मेरे को सारी चीजें बता दी जो बैलेंस डाइट के हिसाब से। अगर मैं इसको और स्पेसिफिक देता हूँ, एंड फॉर मी, फॉर weight loss, if it for 2 months, देखो मैंने उसको बोला कि देना है, आई एम अ 60 kg मैन, डिजाइन अ प्रॉपर डाइट प्लान फॉर मी फॉर वेट लॉस, गिव इट फॉर 2 months इन अ टेबल फॉर्मेट। और स्पेसिफिक होगा, 2 months के लिए तो देना ही है, साथ में टेबल में भी देना है ताकि मैं उसको रीड अच्छे से करूँ। अभी इसने मेरे को ब्रेकफास्ट में मील भी दे दी, ये देखो मिड मॉर्निंग की मील है, लंच की मील है, आफ्टरनून की मील है, इस हिसाब से। अब ये बता रहा है कि इस प्लान में ये विटामिन के साथ साथ ऐसे ऐसे फैट्स इंक्लूड है एंड ऑल। देखो इसमें ये सब चीजें दी है, तो जितना हम कंटेक्स्ट प्लस टेक्स्ट के साथ जाएंगे तो बेटर आउटपुट निकल के आता है। ओके, दैट इज व्हाट अ क्वालिटी प्रॉम्प्ट इज। तो यहाँ पे आई होप यू ऑल आर नाउ अवेयर अबाउट अ सिंपल प्रॉम्प्ट एंड अ क्वालिटी प्रॉम्प्ट। चैट बॉक्स में कुछ, चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई लाइक we are having some special things for our most active members throughout the event। बेसिकली जो लोग सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे उनके लिए ऑलवेज सीएस इज हैविंग समथिंग। आई एम सीइंग ओनली दीपांशु, धोनेश, तेजस, अभी बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं। कुछ मिलेगा नहीं तो शायद तुम रिप्लाई भी नहीं करोगे। तेजस इज आई थिंक एक्टिव, तेजस, दीपांशु इज देयर, ऋषिकेश इज देयर, धोनेश इज देयर। ओके, लेट्स गेट बैक टू ट्रैक। 1 minute। अब हम आते हैं हमारे सीक्रेट फॉर्मूला पे, ठीक है। सीक्रेट फॉर्मूला ही ये चीज है, सब सीक्रेट फॉर्मूला कैन गिव यू अ वेरी बेटर आउटपुट इसमें। और जितने और स्पेसिफिक हो गया, एक बड़े कंटेंट को, एक हमारी बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया है इसमें परसोना में। फिर कंटेक्स्ट देंगे, फिर उसको टास्क देंगे, एग्जाम्पलर, एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम करना चाहते हैं उस चीज को, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और हमारी टोन मैटर करती है यहाँ पे, हमें वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, अब हम उसके साथ जाते हैं प्रॉम्प्ट पे, स्किप जीपीटी पे हम लोग ट्राई करते हैं इस चीज को। ठीक है, अब पहले तो पर्सोना देंगे। एक बार, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो कि हम लोग क्या जनरेट करना है, मतलब क्या। अब मैं मेरी एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे अच्छा आप लोग बताओ मुझे कि व्हाट शुड वी जनरेट ऑन व्हाट टॉपिक, अदरवाइज आई विल प्रोसीड विथ माइन। ओके, ठीक है। फ्रंट एंड के साथ जाना है बेसिकली। शुड वी प्रोसीड विथ फ्रंट एंड, एनीबॉडी एल्स? यस, ओके। Ask your friends to join so that they, we are giving certificates to everyone as well. But those who, stay till end,
ओके रोड मैप, ठीक है। फर्स्टली अभी जितना हमने अब तक पढ़ा है कि मतलब बेसिक होना है या फिर पहले उसको असाइन करना है टास्क को, ये सब चीजें। अब मेरे को एक बार बता दो कि शुरुआत कैसे होगी ये प्रॉम्प्ट की, शुरुआत होगी कैसे, हाउ शुड आई स्टार्ट। अगर तुम लोग को करना है तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे इस चीज को, मतलब अगर हम स्पेसिफिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे, हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप मांग रहे हैं, जैसे तेजस ने बोला कि चैट जीपीटी को रोड मैप के बारे में पूछना है, तो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे मैंने बोला फ्रंट एंड पे लेते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप मांग रहे हैं, तो कैसे स्पेसिफिक और कैसे बेटर आउटपुट आएगा, शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, हाउ शुड वी स्टार्ट, यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स एनी स्टार्टिंग। Yes. If you want to speak and answer, you can specifically raise your hand. The option in the Microsoft Teams you can see on your screen, so that our team will give you a mic access and you can start. Anybody wants to speak, please raise your hand so that our team can give you access. Otherwise, I'll proceed. I'm not finding all other attendees attentive. They are only named as attendees. Ayush, Ayush is there. Akshita is there. Asraka is there. I'm seeing Donesh in the chat Hello. box. Yes. Yeah. Firstly, your Uh, introduction, please. yes, sir. I'm Dipanshu from first year here at GHRC. So for giving the prompt to, so basically our ultimate goal is to get a basic roadmap and all the like things that we need to do for front end development. So considering I'm a beginner, so I would prompt ki hey, I'm a beginner in like web development. So can you provide like my level? I would like first of all say I'm a beginner and I'll provide my like academic details. Can you Basically, can you tell me that prompt? I'll share it with everyone so that I can type your prompt here. Can you please repeat again? I'm a beginner. Okay. I am a beginner in web development. I am a beginner in web development. Okay. Web development. Share with me a roadmap. Yeah. Okay. Share a roadmap with me. Share the roadmap and basically a step-by-step process that I need to follow to be Okay. That is front roadmap. end. No? That is what is Sorry. roadmap. So that is what is roadmap. So you don't need to put like a step by step. Okay, I'll do as well. Step by step. Okay, we'll go step by step. Step by step. Okay, we'll go now. So You can see on your screen as well. Now you can yeah, see on your screen as well, right? So that is the output. We have put a prompt, right? Now how we can yeah. frame it with our secret formula, right? Okay. How can we frame it with our secret formula? Now, okay, so you can unmute yourself now. Thank you, Dipanshu, right? Thank you, Dipanshu. Yes, yes. So now we'll put like firstly, as I have said, here or you can look here also we can say that firstly we have to assign a role. That is what is persona. Again, I have explained. Okay. So firstly, assigning the role. Act like a front end developer. Now we will be more specific here. Act like a front end developer with uh, I would say 8+ years of experience. Okay. Or one sentence is over. We have given him the persona, right?
Now I have to give a context to it. Persona is done. Now I have to give a context. I am a beginner in this field. I'm a beginner in this field. I have to start from the scratch. Right? I have to start from the scratch. अभी टास्क देना है, राइट? तो अभी पहले तो हमने लिख दिया कि act like a front end developer with 8+ years of experience. I am a beginner in this field. I have to start from the scratch. Now उसको देना है अपने को टास्क. पर्सोना दे दिया, कंटेक्स्ट हो गया, अब देंगे टास्क. Give me a detailed roadmap for the same in a structured. अब देखो यहाँ पे ये चीज स्पेसिफाई करनी है. एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ. यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि वी हैव टू स्पेसिफाई फॉर्मेट एज वेल. एग्जाम्पलर तो हम उसको दे ही रहे क्योंकि हम उसको एक बता रहे कि किस तरीके से तैयार करना है. टास्क वी आर असाइनिंग हिम टू मेक अ रोड मैप फॉर अस. और फॉर्मेट भी देना है यहाँ पे. तो और स्पेसिफिक फॉर्मेट का ऐसा नहीं होगा कि हर बार फॉर्मेट टास्क के बाद ही आएगा, टास्क के साथ भी आएगा. जरूरी नहीं है टास्क हो जाएगा फिर फॉर्मेट लिखेंगे. तो एक साथ भी लिख सकते हैं. गिव मी अ डिटेल्ड रोड मैप फॉर द सेम. यहाँ पे फुल स्टॉप देखे मैं सामने उसको कर सकता था, लेकिन वी कैन राइट इन अ सेंटेंस. गिव मी अ डिटेल्ड रोड मैप फॉर द सेम इन अ स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट. फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जैसे वी कैन आस्क हिम फॉर 3 months या फिर 4 months. जितना टाइम तुम्हारे पास में है, बिकॉज एज वी आर द यूजर वी हैव टू गिव हिम द इनपुट. Able give me a detailed roadmap for the same in a structured table format. Remember, see, if you put this type of verbs, then GPT takes it very specific. So remember to make it a 3 to 4 months roadmap. जितना बड़ा prompt होगा उतना अच्छा prompt होगा. Remember to make it a 3 to 4 months roadmap. इसमें अगर और तुम सामने देखो, also add some project examples along with the frameworks used. अभी हम आते हैं इस पे. देखो वो प्रॉम्प्ट आ गया. अब देखो, नाउ यू कैन सी, हमने बोला था कि आई एम अ बिगिनर इन वेब डेवलपमेंट, शेयर अ रोड मैप विथ मी. तो इसमें इसने बता दिया, ये तो सबको पता है. HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना है, फिर वेब पेज बनाएंगे, फिर वर्जन कंट्रोल दैट इज अ गेट एंड गेटअप, फिर फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क सीखेंगे, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये हो गया. अब देखो यहाँ पे जैसे सीक्वल MongoDB ये हो गया डेटाबेस में, देन दैट इज API. एंड ये मांगा था फ्रंट एंड का, इसने पूरा मतलब फ्रंट एंड का तो दिया ही है, साथ में और कुछ चीजें दी है ज्यादा की. यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया. देखो अभी काफी स्पेसिफिक है. नाउ I'll read for you all, right? इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे दिया 3 to 4 months का. अब मंथ 1 में CSS और HTML की मास्टरी बताएगा. व्हाट टॉपिक्स टू कवर? HTML के फंडामेंटल, CSS की बेसिक और स्टाइलिंग, और रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखना है. प्रोजेक्ट्स का बोल दिया था लास्ट में. एग्जाम्पलर मैंने कहा था, एग्जाम्पलर अगर दोगे कि किस तरीके से मुझे चाहिए, व्हाट टोन शुड बी, मतलब क्या टोन में मुझे चाहिए, मेरा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये भी दिया था. फॉर्मेट भी दिया था टेबल का. देखो प्रोजेक्ट्स आ गए यहाँ पे. पहले तो HTML CSS से पोर्टफोलियो बनाने लगाएगा अपने को. फिर जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स आ गई.
डॉम मैनिपुलेशन आ गया और इवेंट को हैंडल करना आ गया। इसमें इंटरेक्टिव लैंडिंग पेज बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया है बेसिक सा। इसमें हाँ, फिर फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन सीखेंगे 3rd मंथ में। कोई भी एक फ्रेमवर्क लेंगे, रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एक ऐप बनाएंगे, सिंपल ऐप जो फ्रेमवर्क है उसका। देन कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर सीखना है, इसमें स्टेट मैनेजमेंट सीखना है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। दैट्स नॉट अवर टॉपिक नाउ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसने फ्रेम किया। फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट पे इसने हम किया था, और लास्ट में ई कॉमर्स का वेबसाइट, एक बिग प्रोजेक्ट, एक बड़ा थोड़ा छोटा सा, एक मतलब बिगिनर लेवल पे एक अच्छा प्रोजेक्ट इसने बनाया। अभी अगर तुम चाहो इस पे फॉलो अप लिखना, फॉलो अप कैसे लिखते हैं कि हाँ, फॉलो अप के बारे में पीपीटी में आई हैव नॉट मेंशन बिकॉज पीपीटी पे ज्यादा मेस हो जाता है उस चीज, इसीलिए मैं फॉलो अप का बता देता हूँ। फॉलो अप किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे तुमको याद होगा कि इसके पहले हमने जो हाइट वाला लिया था, उसके बाद जब मैंने वहां पे कंटेक्स्ट दिया था, ये वाला कंटेक्स्ट, आई एम अ 60 केजी मेल, जो कि हमने परप्लेक्सिटी में बाद में एम्बेड किया। लेकिन यहाँ पे जब मैंने दिया था, तब उसने ऊपर ऊपर मैंने जो 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उसके साथ उसने उस चीज को रिलेट किया था नहीं किया था, उसको रिलेट किया था, राइट। उसने वो प्रॉम्प्ट मुझे आउटपुट देना चालू कर दिया था 60 केजी मेल के अकॉर्डिंग हाइट का। कितने लोगों ने वो देखा है? जब मैंने जीपीटी में आई एम 60 केजी मेल लिखा था, तब ऐसा आउटपुट आया था कि 60 केजी मेल के अकॉर्डिंग उसने हाइट प्लान दे दिया था, जबकि मुझे वो चाहिए नहीं था। Put it in the chat box. How many of you have seen that when I do stages is and reacting to each and every thing. Deepanshu as well. So अभी फॉलोअप के बारे में सीखते हैं। फॉलोअप मतलब बेसिकली वही है कि जो भी हम प्रॉम्प्ट देते हैं, अब ये प्रॉम्प्ट तो मैंने दे दिया, अब मुझे अगर पता नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट, तो मैंने इससे प्रॉम्प्ट के जरिए ये पूरा डिटेल रोड मैप लिया। अब मुझे तो ये भी पता नहीं होगा एज अ बिगिनर ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है। तो अभी इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको फॉलो अप देंगे। तो यहाँ पे इसको बता देंगे कि एक्ट लाइक अ डेवलपर एंड give me a complete and full sorry give me a full pledge। the more number of words हो गया, adjectives हो गया, या फिर मतलब 2 चीजें लगती है इसमें, एक एनालिटिकल थिंकिंग हो गई आपकी, और एक क्रिटिकल थिंकिंग हो गई कि किस तरीके से आप सोच के प्रॉम्प्ट लिखते हो इसमें। हाँ, और मोर नंबर ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये अगर आप स्पेसिफिकली यूज करते हो तो एआई उसको काफी मतलब बेटर आउटपुट देने की कोशिश करेगा आपको हर बार जब आप लिखते हो वहां पे कि ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें इमोशन तो है नहीं कि हम जिस तरीके से बताएंगे, हम अगर अग्रेसिव होके बताएंगे तो ऐसा, वो टोन में अग्रेसिवनेस आना चाहिए फिर। अब यहाँ पे जैसे इसको फॉलो अप लिखते हैं, ये जो रोडमैप दिया है, इस पे ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, हम ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट का कोड निकालना है अभी। एक्ट लाइक अ डेवलपर एंड गिव मी अ फुल फ्लेज कोड फॉर मेकिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। अभी इतना ही लिखते हैं अभी का। वेबसाइट में क्या होना चाहिए ये मैंने लिखा नहीं, ठीक है, अभी दे ही देगा। अगर फ्रेमवर्क आई हैव यूज्ड, तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज किया, ऐसा बता दिया था, उसका भी मुझे कोड चाहिए तो वो भी ले लिया। अब ये कोड काफी एकदम हाई एंड लेवल का नहीं होता है नॉर्मली, इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट अगर
जितना बेटर प्रॉम्प्ट लिखोगे, अगर इसमें आपने कुछ बता दिया कि मुझे ये जैसे ऐप हेडर है, यहाँ पे बेसिकली ऐप हेडर, इसके ऐप हेडर हो गया, फिर प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट सेक्शन में अगर आपने कुछ स्पेसिफिक चीजें बता दी कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो ऐड करके देगा, लेकिन आपको फॉलो अप में प्रॉम्प्ट्स देते जाना पड़ेगा। जैसे इसने इस ऐप में वेब ऐप, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट कार्ड्स, ये सब किया है, क्योंकि एज इट इज ई कॉमर्स, इसने वो लास्ट में ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, उस चीज के लिए किया है। अब अगर इसको रन करके अगर हम मतलब कहीं देखते हैं कोई कंपाइलर में, तो तुमको बाद में जाके वो जो आउटपुट आता है, देयर यू कैन सी कि ये काफी कभी कभी बेसिक सा बन जाता है। उसको अगर तुमको बेटर यूआई देना है, तो वहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि गिव मी अ बेटर, जैसे सीएसएस अगर मुझे पसंद नहीं आया, सपोज मुझे कोई वेबसाइट जैसे ये दिख रहा है तुमको स्क्रीन, इसका मेरे को अगर डिजाइन पसंद नहीं आया, तो गिव, जैसे अगर मैं उसको इसी में फॉलो अप दूंगा, गिव मी अ बेटर सीएसएस कोड which creates more beautiful beautiful and more beautiful and user friendly and का spelling and user friendly UI। देखो अब यही कोड इसने दिया CSS का, ये जो CSS का कोड था, यहाँ पे जो CSS का कोड था, यू कैन सी, देखो इसमें, देखो इसी इसका कोड देखो, और ये वाला देखो, इसमें इसने बेटर कोड दिया। एक मिनट, ये तो इसका है CSS, इसमें इसने बेटर कोड दिया। तो आप जब इसको अप्लाई करते हो ना, तब जाके यू विल सी दैट दैट इज एक्चुअली अ बेटर कोड। अब इसमें और अगर बेटर बनाना है, तो तुमको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। द मोर स्पेसिफिक यू विल बी, द मोर डिजायर्ड आउटपुट यू विल गेट। यही चीज मैं 10 बार बोलूंगा ये इवेंट में लास्ट तक, क्योंकि उसका एट द एंड इसका कंक्लूजन ही है। तो ये तो सीक्रेट फॉर्मूला तो समझ गया कि पर्सोना देना जरूरी है। और काफी सारे एग्जांपल देखेंगे हम। एक मॉड्यूल है, एक काफी प्रीमियम मॉड्यूल, आई हैव अ प्रीमियम मॉड्यूल फॉर यू ऑल, जो कि मैं डिस्कॉर्ड में सेंड भी कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। 50 जीपीटी प्रॉम्प्ट्स और 50 डिफरेंट सिचुएशंस, यहाँ पे खुला है वो अभी, यू कैन सी 50 awesome chat GPT prompts. You can use it in any AI search engine, whether you use in Perplexity or use in cloud, anywhere. लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि एक एक टूल के बारे में देखते हैं जहाँ पे हम लोगोस डिजाइन कर सकते हैं एआई के थ्रू। वहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट लगेगा कि मोर स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट वो बेटर दिखेगा, इमेज फिर लोगो जो भी है। इसमें देखो काफी सारे प्रॉम्प्ट्स रहेंगे, विल लुक ओवर इट। इंटरव्यू के लिए चाहिए या फिर कौन सी चीज के लिए चाहिए, तो देखो मतलब इसमें देखते हैं हम। इसमें भी देखो सेम मेथड से जा रहे हैं लोग। एक्ट एज अ पोजीशन वाली सिचुएशन के लिए बताया कि अगर इंटरव्यूअर किसी को बना के मेरा इंटरव्यू मुझे कंडक्ट करवाना है, बेसिकली चैट जीपीटी से, क्योंकि आपको मे बी और मे नॉट भी पता होगा कि टुडे इट इज हैपनिंग दैट most of the students or graduates today try to take their interview or try to test themselves by chat gpt। जैसे यहाँ पे इसने दिया है कि आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर और आई विल बी द कैंडिडेट। अब इंटरव्यूअर बताया आई विल बी द कैंडिडेट एंड यू विल आस्क मी द इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखो अभी इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है, वी थिंक दैट प्रॉम्प्ट शुड बी ओनली 2 लाइन 3 लाइन। देखो इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है, बट आउटपुट भी उतना बेटर आता है। नॉर्मली इफ द प्रॉम्प्ट इज बिगर, it doesn't mean the output will be good, but if the prompt is specific, though it is lengthy, the output will always be better। Okay, so इसको बाद में देखते हैं, we'll look over it afterwards। Now we'll get back to our track। So what is a prompting process? वही है prompting process, nothing different। See, firstly I have just as I have told that character, always define a character or persona first so that you get an advantage। This is always an edge over advantage to a chat GPT prompt or any AI search engine prompt। When you define a character, it always give you a better prompt। यहाँ पे करके देखते हैं और एक बार। See, act like a
act like a marketing marketing expert. Act like a marketing expert. इसको persona दे दिया. Give me give me a detailed 1 month marketing marketing plan. Act like a marketing expert. Give me a detailed 1 month marketing plan चाहिए for my startup, which is यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफिक विच इज कोलन सेमी कॉलन में जाएंगे. स्टार्टअप कोई भी दे देते हैं हम लोग. स्टार्टअप दे सकते हैं विच इज अ फ्रूट ओके ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी. ये ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है स्टार्टअप. हाँ. the the plan should include. जैसे हम किसी से इंसान से बात करते हैं ना, बेसिकली वैसे ही इसमें डालना. बस थोड़ा स्पेसिफिक और स्टेप बाय स्टेप जाना. the plan should include the plan should include all the strategies. The plans should include all the strategies which will increase our customers. देखो ठीक है. The format, the plan should be in table format. यहाँ ये गलती मत करना जो मैंने अभी कर दी है. 10 बार should be plan should be तो और ज्यादा बड़ा हो जाता है स्पेसिफिकली. छोटे फॉर्मेट में we can write it. Right. Okay, so we'll now start. See, detailed 1 month plan. See, week by week 4 week का प्लान आ गया. एडिशनल टिप्स आ गई, कुछ एक्स्ट्रा उसने दे दी जो चाहिए नहीं थी हमको. सी अब एवरीबडी एक एक टास्क लेते हैं अभी. मतलब वैसे तो आई डोंट थिंक मैं कर रहा हूँ और तुम लोग बस देखोगे तो इट वुड नॉट बी गुड. एक काम करते हैं, तुम लोग भी ना, हाँ, तुम लोग भी ट्राई करो कि कोई इसका करो एक तुमको भी देखो. मतलब तुम भी सेम एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके एक बार डिस्कॉर्ड सर्वर में या फिर चैट बॉक्स में डालो. डिस्कॉर्ड सर्वर में डिस्कॉर्ड सर्वर यू कैन पुट इट इन डिस्कॉर्ड सर्वर. चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर में भी वुड बी बेटर. पुट इट, यू कैन पुट Julius AI. Yes, yes. We can try Julius AI for codes. Yes. We can share you the PPT as well. Okay. You want that slide? So if you screenshot it, put it. Okay, I will make it big. So if you screenshot it, put it in the Discord as well, so that everyone can.
हो गया ना, मतलब डन, दीपांशु डन, यस ओके. सो see, जैसे I have taken a prompt, act like a marketing expert, give me a detailed 1 month marketing plan for my startup. ऐसा है ना, तो you should to generate a prompt for this and put it in the Discord server. तब तक I will continue. You can do. That is what is prompting process. Firstly, we are taking a character. जैसे character का और एक हमने example लिया अभी. Character define किया marketing expert का. Normally अगर करते हैं तो तुमको output थोड़ा different दिखेगा. लेकिन अगर हम उसको specifically बता देते हैं कि उसका persona दे देते हैं कि you are a marketing expert, then it will always be better. Now then, using of action verbs. Again, I am stating the same. जैसे मैंने तब भी बताया था कि using of action verbs at the start of the prompt will always helpful. एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट इन द सेंस कि अभी कैरेक्टर तो डिफाइन हो गया, तो उसके बाद कैसे स्टार्ट करते, तो एक्ट लाइक के बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, मतलब एक कैरेक्टर हमने डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे गिव से हो गया, या फिर एनालाइज हो गया, या फिर क्राफ्ट मी हो गया, ऐसे इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं, मतलब एक्शन वर्ब यूज करके. एंड डिफाइन अ कंटेक्स्ट. सेकंड प्रोसीजर में कंटेक्स्ट डिफाइन होता है. जैसे मैंने बताया था कि हम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं. मैं बिगिनर हूँ, आई एम अ स्टार्टअप ओनर. ये सब चीजें कंटेक्स्ट हो गई कि एआई को पता चले कि व्हाट आर यू एक्चुअली एंड व्हाट डू यू नीड एक्चुअली. ठीक है. इन द थर्ड प्रोसीजर वी ऑलवेज डिफाइन अ टास्क. जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, ये तो एक फॉर्मूला हो गया था, इसको हमने ब्रेक डाउन किया था. उसी की प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो होती है, वी आर सीइंग द प्रॉम्प्टिंग प्रोसेस. डिफाइन अ टास्क इन अ डिटेल विथ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स. सारी रिक्वायरमेंट को मेंशन करना जरूरी है. स्पेसिफिकली सारी रिक्वायरमेंट को मेंशन करना जरूरी है. जैसे अभी अगर हम यहाँ जाते हैं, परप्लेक्सिटी पे जाते हैं, जब हम स्पेसिफिकली सारी, जब हम यहाँ पे डिटेल्स देते हैं ना सारी, यहाँ पे जब हम देते हैं कि हाँ, अब राइट, अब अगर ऐसा प्रॉम्प्ट दे दिया, सपोज राइट लीव लेटर फॉर मी एंड 2 days. ये नहीं लिखता हूँ मैं, अभी अभी लिखता हूँ मैं राइट अ लीव लेटर फॉर मी टू माई मैनेजर टू डेज हॉलीडे. अब इसको नीचे यहाँ पे स्पेसिफिक देना. द, ये एक नया है जो पीपीटी में मेंशन नहीं है, इस तरीके से जा सकते हैं. द मैसेज या फिर जो भी लेटर है, द मैसेज शुड इंक्लूड. इससे भी अच्छा आउटपुट आता है. आई हैव ऑलवेज ट्राइड दिस, तो एक बार देखना. द मैसेज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स. फॉलोइंग डिटेल्स को यहाँ पे कॉलम दे दिया, मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी रिक्वायरमेंट्स. जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी कि डिफाइन अ टास्क विथ ऑल योर रिक्वायरमेंट. टास्क तो दे दिया, मैंने रिक्वायरमेंट उसको दी नहीं, रिक्वायरमेंट मुझे देनी पड़ेगी. मोर रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है सारी मैं उसको अलॉट करूंगा. ठीक है. सो हाँ, सो फर्स्टली ऐसा मतलब मैसेज शुड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स. पहला लीव फॉर, यू विल लीव फॉर 2 days है. अब सेकंड मेरा रहेगा कि लीव चाहिए किसके लिए, लीव चाहिए किस चीज के लिए, क्रिसमस हॉलीडेज, हॉलीडेज क्रिसमस हॉलीडेज के लिए चाहिए. थर्ड, इसमें लिखूंगा मैं कि कंपनी नेम, मेरे कंपनी का नाम. यहाँ पे अगर डिटेल्स दे दी तो तुमको बाद में वो चेंज करने की जरूरत नहीं है. कंपनी नेम दे दिया मैंने अमेजोन. ठीक है. अब 4, इसमें हम दे सकते हैं कि बी रीजन स्पेसिफिक.
ज्यादा मतलब ताकि वो इधर उधर भटके ना। और अब मेरी चौथी रिक्वायरमेंट है, इट शुड नॉट exceed 100 words. Craft a well convincing message. ठीक है, कन्विंसिंग भी होना चाहिए मैसेज, नहीं तो लीव लिख के अगर सैंक्शन नहीं हुई तो देखो अभी। जी जी 2 days लीव का आ गया। Absence from Amazon for Christmas holidays. The specific reason for the leave is spend quality time with my family during the festive season. ये सब आ जाता है। I assure you that I will complete my pending work before the leave and ensure smooth handover. नॉर्मली अगर लिख देते हम, नॉर्मली अगर लिख देते ऐसा, इसको कंट्रोल सी कर देंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। अभी डिफरेंट चैट है हमारा, इसको कंट्रोल वी प्लेस, ये भी लेटर दिख देता। देखो इसने बोल दिया कि प्रोवाइड रीजन फॉर बाय योरसेल्फ, मैंने बस इतना ही लिखा था। यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी थी हमने, हमारी लीव लिखा था 2 days का है, क्रिसमस के हॉलीडेज है, कंपनी नेम अमेजोन दिया था और उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया था चैट जीपीटी को कि बी रीजन स्पेसिफिक, और एक्सीड लिमिट लगा दी थी, इतना बड़ा है। दैट्स व्हाट इज डिफरेंट। ये देखो शॉर्ट, शॉर्ट क्रिस्प एंड बेटर, बस इतना तो आपको, बस यहाँ पे आपको मैनेजर का नाम डालना है। अगर वो मैं डाल देता, सी फॉलोअप का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। माय मैनेजर नेम माय मैनेजर्स नेम इज, मैं स्पेसिफिकली लेता हूँ, आ गया डियर रोहन, दैट इज व्हाट इज फॉलोअप। यही मैं यही एडिट कर देता, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे 5th है 6th है, यहाँ पे और एक बार कॉमा देंगे, 6 नंबर लिखेंगे, मैनेजर्स नेम, मैनेजर्स नेम दिया रोहन, कॉमा दिया 7th, माय नेम, मेरा भी नाम देना है ना, माय नेम यहाँ पे आ गया। ओके ठीक है, अभी देखते हैं। अगर उसको रीराइट करने लगाओगे तो वो हमको हर बार नया नया आउटपुट ही देगा, लेकिन उसने वो स्पेसिफिक रखा है। देखो आई अश्योर यू दैट आई विल, और बेटर आया। देखो डियर रोहन, ये आ गया। यहाँ पे जो मिसिंग था, यू कैन सी डियर मैनेजर्स नेम, सिंसियर यूर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो डियर मैनेजर्स नेम की जगह डियर रोहन डाल दिया, क्योंकि मैंने उसको पहले बता दिया था कि मैनेजर का नाम रोहन है और माय नेम इज श्रीशैल, so sincerely it is at last you can see, and this is, that is what is follow up। ये हो गया एग्जांपल, और एक ये हो गया स्पेसिफिक और बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैंने ज्यादा बड़ा कोई फील्ड नहीं चुना, सीधा सीधा लीव लेटर लिखने के लिए प्रॉम्प्ट लिखा, वो भी इतना इतना सा प्रॉम्प्ट है 4 लाइन का, उनको सब मिल गया और क्रिस्प मिल गया विद बेटर आउटपुट। यहाँ पे मैंने पहले, यू कैन सी, मैंने माय नेम नहीं लिखा था, मैनेजर नेम नहीं लिखा था, और अगर मैं नहीं लिखता इट शुड नॉट एक्सीड, तो देखते हम क्या होता। दैट इज इम्पोर्टेंट। रिक्वायरमेंट्स अगर हट जाए तो आउटपुट कैसा था हम ये देखते हैं एक बार। अभी शायद फॉलो अप है तो आई डोंट थिंक इट विल
इसको देखते हैं एक बार, ये कितना बड़ा देता है। हाँ, अभी फॉलो अप था तो शायद इसने ज़्यादा दिया नहीं। ठीक है, हम लोग कंट्रोल सी जीपीटी में देखते हैं, वहां पे फॉलो अप है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक्सीड लिमिट है ही नहीं, ये आ गया और इतना बड़ा एक्सीड लिमिट ही नहीं है। अब इसको जब कॉपी करके हम यहीं पे फॉलो अप देते हैं, अभी इसको यहाँ पे मैं एक्सीड लिमिट ऐड करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे एक्सीड लिमिट ऐड कर दो। अभी देखते हैं जीपीटी स्पेसिफिक होता है कि नहीं होता। 5th नंबर पे आएगा वर्ड्स लिमिट इक्वल्स टू 100। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे भी आ जाएगा, आगे आई एम राइटिंग अ रिक्वेस्ट टू डेट स्टार्ट डेट, और अभी इसने मतलब और कुछ चीजें स्पेसिफिक मांगी है, स्टार्ट डेट लिख सकते हो, एंड डेट लिख सकते हो, तो अभी हमको लिखना नहीं है, वो पता है सबको, तो वो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये समझा एग्जांपल, मतलब हाउ डू वी क्राफ्ट और हाउ कैन वी क्राफ्ट द प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स, क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं बाय जस्ट गिविंग हिम द मोर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड गुड इंफॉर्मेशन टू द एआई मॉडल। ये समझा है ना कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं उस चीज को, मतलब क्राफ्ट कैसे करें क्वालिटी प्रॉम्प्ट, हाउ टू क्राफ्ट क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स। I think I'm back. Sorry. A short of a network issue from my side. I'm audible now? Thank you, Tejas. अभी वो तो हो गया है। नाउ अभी सामने जाते हैं इसको। जैसे ये ज्यादा अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें जैसे क्विक आ गया है कि कीप ऑल योर थिंग्स प्रॉपर्ली एंड फीड द मॉडल। सी, जितना तुम एआई को फीड करोगे उतना तुमको अच्छा आउटपुट देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी को भी मतलब जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना बेटर हम निकल के आते हैं। तो जितना तुम एआई को ट्रेन करोगे, जो फॉलो अप में हम लोग लिखते हैं ना स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे आता हूँ, ये जो ट्रेन करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो जीपीटी में देखते हैं, सॉरी परप्लेक्सिटी में देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इससे लिमिट हटा दी थी यहाँ पे, लाइक यू कैन सी यहाँ पे 5th नंबर का है ही नहीं पॉइंट, लिमिट हटा दी थी, लेकिन मैंने इससे 3 से 4 जनरेट करवाए ऊपर। इसमें इसको समझ लिया कि इसको इतना ही चाहिए, और इसने फॉलोअप में ऐसा लिखा नहीं कि लिमिट नहीं चाहिए। अब नीचे आया, जब मैं नीचे आया और जब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जब मैं ऐसे हटा देता हूँ कि लिमिट मेरे को नहीं चाहिए, फिर भी वो मेरे को उतना आउटपुट देगा। वही जीपीटी में वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको पहले बताया नहीं था। अभी अगर इसको हमको रीट्रेन करना है, हमको एआई को ये बताना है अभी कि तूने जो मुझसे इंफॉर्मेशन ली थी कि 100 वर्ड्स की लिमिट है, एंड आई डोंट वांट दैट 100 वर्ड्स लिमिट, दैट वाज माय मिस्टेक। सो अगर मेरे को अभी 200 वर्ड्स में चाहिए तो मैं इसको फॉलो अप दूंगा, राइट इट इन 150
200 वर्ड्स इसका फॉलोअप हो गया, राइट। इसके फॉलोअप में अब देखो, आया, यू कैन सी, दिख रहा है अभी, मतलब अभी देखो, अभी इसको बता दिया, when we want to make any images it hurts to write from sometimes. Yes, we'll go into images as well. ओके, अभी उस पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी मतलब ये टेक्स्ट वाला समझ में आ गया ना, अभी उसमें जाना है क्या, इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाना है अभी, एक बार मैं थोड़ा खत्म कर लेता हूँ सामने का। ये सिंपल हो गया और एक मल्टीटास्क हो गया। सिंपल प्रॉम्प्ट मतलब जो हम लिखते आ रहे हैं इतने जब से चैट जीपीटी आया तब से। अब मल्टीटास्क प्रॉम्प्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मल्टीटास्क प्रॉम्प्ट का एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल। ये किया कॉपी, ये मैंने लिखा था, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। इसको परप्लेक्सिटी में लिखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से खत्म कर पाए, ठीक है। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो कंट्रोल भी। अब जैसे मैंने कहा था कि वी हैव टू डू इट ऑलवेज बाय चेंजेस मतलब स्टेप्स बाय स्टेप जाना पड़ता है। अब ये मल्टी टास्क प्रॉम्प्ट है, इसमें मेरे को एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे को 3 अलग अलग तरीके की चीजें है, 3 मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मेरे को फुलफिल करनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप गया। पहला मेरा स्टेप में मेरे को क्या करना है कि एनालाइज द की चैलेंजेस। जैसे मैंने पहले बोला था, अगेन आई विल टू रिपीट, यू ऑलवेज यूज द वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, एनालाइज, सजेस्ट। देखो स्टेप 2 हो रहा है। ये दो मल्टी क्वेरी अप्रोच है। मल्टीटास्किंग के जरिए हम वहां पे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे सी, एनालाइज द की चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस इन द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट, एज वेल एज स्टेप 2 में लिखा है सजेस्ट 3 स्ट्रेटजीज दैट स्मॉल बिजनेस ओनर्स कैन इंप्लीमेंट टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। अब मेरे को ये तो पता चल जाएगा यहाँ पे कि एक्चुअल में स्मॉल बिजनेसेस कौन सी डिफिकल्टीज है वो फेस करते हैं, लेकिन उस पर मेरे को सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैं तो बिगिनर हूँ, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने दोनों फॉलोअप उसको दे दी एक साथ। अभी इसका जनरेट करते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट वन इज द एनालाइजिंग द की चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस। देखो अभी स्मॉल बिजनेसेस फेस वेरियस चैलेंजेस, एक्स वाई ज़ेड उसने सामने लिखा, ये सब देखो। एक्सप्लेन ऑल दोस चैलेंजेस। अभी देखो, अगर मैं, इसने एक्सप्लेन नहीं किया, एक्चुअल चैलेंजेस को एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे इसने करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट में यही बताया कि कौन से चैलेंजेस होते हैं। देखो, एक हो गया कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइंडिंग कस्टमर्स, इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, हायरिंग टैलेंटेड पीपल एंड मैनेजिंग वर्क। ये सारी चीजें थी। इसने बेसिक फोकस किया स्ट्रैटेजीज पे, तो मेरे दोनों काम इसने कर दिए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जो चैलेंजेस है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन दोस चैलेंजेस, ये एक्सप्लेन भी एक अच्छा कीवर्ड है। कीवर्ड्स को ध्यान में रखना। वो जो मॉड्यूल शेयर होगा तुम्हारे साथ में, उसमें यू कैन सी वेरियस सिनेरियोस और वेरियस सिचुएशंस में किस तरीके से यूज किया। एक्सप्लेन दोस चैलेंजेस इन मोर डिटेल। अब यू कैन सी, अभी ये हो गए चैलेंजेस, अब ओवरकम, अब इसने ओवरकम का नहीं दिया क्योंकि मैंने चैलेंजेस के बारे में मांगा। ओवरकम का हमारे पास में है, किस तरीके से ओवरकम करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से इंप्रूव किया। अभी इसको अगर स्पेसिफिक करना तो इसको कॉपी करो ऐसा, इसमें का पढ़ लो क्या है, तो फिर लिखना कि इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो पॉइंट है इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करो। कंट्रोल सी, और चाहिए स्पेसिफिक, एक्सप्लेन thoroughly how to implement फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से improve। और आया वापस इसके अंदर का आया। अभी ये नहीं समझ रहा तो इसको और कर सकते हैं हम। मतलब अभी, मतलब नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन तुम जनरेट करा सकते हो। और स्ट्रेटेजीज 10 दिए, 10 की जगह 20 मांगो। हाँ, हो सकता है समटाइम्स 10 ही अच्छी रहे, 10 ही नेचुरल और स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज रहे, तो तुमको 20 में भी 10 का घुमा फिरा के देगा वो, तो 10 ही अच्छी रहेगी नॉर्मली। ऐसा होता है कभी। अगर तुम स्ट्रेटेजीज, इफ यू डिमांड समटाइम्स अबाउट स्ट्रेटेजीज टू अर्न मनी और स्ट्रेटेजीज टू आइडेंटिफाई
एनी स्टार्टअप्स हो गया, या फिर ऐसे कुछ डिफरेंट जो जो तुमको करना है, जो वट एवर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आर, इस तरीके से जाते हैं हम लोग अभी. ओके, नाउ feed your AI. Always try to feed and give as much as details to your AI model. ये मैंने पहले बता दिया था. Feed your AI मतलब एक बच्चे को अगर हम अच्छे से खाना खिलाते हैं बचपन से, तो जब बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं पे मजबूत होगा. यस, हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी. यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट को हम अच्छे से फीड करते हैं, या फिर ये प्रॉम्प्ट में अच्छे से लिखते हैं, प्रॉम्प्ट को अच्छे से फीड किया जाता है एआई मॉडल को, तो आउटपुट अच्छा होगा. सेम एज अ क्रिकेट, सेम क्रिकेट में हो सकता है. क्रिकेट तो सबको पता है, द मोर यू प्रैक्टिस, मोर आर यू इन द फॉर्म. ठीक है. अभी मल्टी क्वेरी अप्रोच समझ गया. मल्टीटास्क अप्रोच, हैव यू अंडरस्टूड मल्टीटास्क अप्रोच, हाउ टू जनरेट output in a when you have to perform multitasks? Let me know in the chat box. Have you understood multitask? Okay, Donesh, Rishikesh, Shrikant is there, Tejas is there. भाई चारों हो क्या यार तुम लोग? बाकी क्या कहा गए? Where is Samir, Vedant, Shamir, Prasad? Okay, fine. Now I think we'll proceed into. Okay, no spam. That is a module I'll share with you all afterwards. These are 50 GPT prompts. अब इसको हम देखते हैं. अब देखना, इसके इसके आउटपुट इसमें दिए नहीं है, तो हम इसको एक दो को अभी ना करके देखते हैं. वन सेकंड, डिस्कॉर्ड में इसको शेयर भी कर दो. आई शेयर विथ 1 मिनट. I would like to ask my team to please share this on the Discord server. Cheat sheet भी है. I have also shared a cheat sheet. There is a cheat sheet as well. Kindly share this on Discord server. I have shared it on the official group. Everyone, you can see now the two PDFs. One is the 50 ChatGPT prompts, and another one is the ChatGPT cheat sheet. Prompt cheat sheet is there. You can learn some new techniques as well into it. One is the short notes, which is of 3 to 4 pages, and another one is 50 ChatGPT cheat sheets. On Discord, please, I would like to ask my team to please share it on Discord. Let me know once it's done in the chat box. I think we'll go on. We can go on this.
See, this is ideogram.ai. Are you seeing it on Discord? That GPT prompts, 50 GPT prompts. Yeah, आ रही है चल जाओ. Okay, okay, okay. So it is shared, right? Okay, okay. like मतलब शेयर हो चुका है. ठीक है, now you can see. इधर आते हैं हम लोग. यहाँ पे लिखते हैं. See, अब tell me what image should we generate. यहाँ पे भी बेसिकली प्रॉम्प्ट की जो प्रोसीजर है, जनरेटिंग क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स विल ऑलवेज बी द सेम. वी आर जस्ट डूइंग दिस फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग. else we'll move on the chat gpt cheat sheet of our cheat sheet. कोई मेरे को इसमें बताओ पहले अभी चैट बॉक्स में. प्लीज टेल मी what should we generate. Sujal, I would like to also suggest you to please put it on Discord as well, website link. Yes, Dipanshu 7 equals to yes. That's not our now topic. So please tell me what should we generate in the ideogram. What images should we generate? See, these type of images can be generated. It's not always this type of images. Sometimes it is very funny. Sometimes it is very worst, not expected as we need, and sometimes it's very good, more than expected. Tell me what should we generate in the chat box, please. Fast. Tejas, Dipanshu, Gaurav, Prasad, Samir, anybody. Shrikant is there. Okay, Santa Claus. Is it possible to do this? Let me see. Uh, create an illustration of Santa Claus. See now, create an illustration of Santa Claus. Now I will put. I'll try something. Wearing a clause in a Punjabi look. Let me see. Are we able to do so? It always takes some time. Ideogram always takes some. See this. So there is a task for everyone, those who are in the meeting, everyone, including members as well as our CIS members as well. See, you can generate something funny and creative. We'll try to give someone something if they are more creative. Like I have created this Santa Claus in a Punjabi look, so I'll share it. I'll share it to Discord. You to do something. What can you do? Donesh, now are you satisfied with my Santa Claus? A different type of Santa Claus, which I have generated Santa Claus in a Punjabi look. So everyone will put on Discord.
So you can do so if you want. Now again, if we can try something else, right? You can try many things. A dog, a logo. Okay, okay, we'll generate a logo. Okay, a logo for my agri tech startup company. Company. Okay, company's name I will specify here. Company's name is Smart. Okay, Agro Star. Agro Star would be my company's name. Uh, it okay. Company is a mediator between between retailer and farmers. Sorry, not a retailers, consumer and farmers. See, consumer farmers. अब इसमें आएगा अच्छा कुछ. These all are public images, so everybody online on the ideogram will be able to see what am I generating. The thousands of images are generated in minutes. So you can generate like this. You see, you can see the life changes. See, this is a book cover. Basically, they have generated a 3D book cover. Somebody here right now has generated this. You can see this. हाँ, so ये देखो आ गया हमारा एग्रो स्टार का लोगो. This is what this I can use for my startup as well. Agro star. If somebody has some different idea, we can change like uh, okay. 8 टेक में अगर जा रहे हैं हम लोग 8 टेक स्टार्टअप है राइट. अब स्टार्टअप के लिए नहीं बेसिकली और दूसरी चीजों के लिए जनरेट कर सकते हैं बट आई एम डूइंग इट. 8 टेक स्टार्टअप वी कैन स्टार्ट एडू एडू स्मार्ट प्राइवेट विजिबिलिटी प्राइवेट. नाउ सी one minute. See, oh no. See what mistake we have done here is the mediator between consumer and farmer is the same. So this is what created an issue. अभी आएगा अच्छा output लास्ट में. Right, we can see that. One minute. See, this is what it has created for Edu Smart. For my see, this is use more specific. It is we can write it's mathematic. It teaches mathematics subject, right? Generate. Specifically, it will use some mathematical logos. You can see now. I think so. See. This. See this. They you can see more number of output as well. And they are generating different like see this Santa Claus. See what prompt they have given, we can see as that as it is an open source and it is a public platform, anybody can use it. See cartoon baby reindeer
See, specifically cartoon baby reindeer around Christmas tree with vibrant colors, letter fashion. Okay, we'll try to give something different. A reindeer. Okay, okay. We will try something different in this. A Santa Claus, Santa Claus in Punjabi look. Santa Claus in 3D. I would ask him to craft this time a 3D Santa Claus in Punjabi look. Now I will say reindeer, with a reindeer, gifts, gifts around him, gifts around him, along with an Xmas tree. Now see what does it gives us. See, I don't think it is a okay. So not a Punjabi look basically, but else everything is fine. Santa Claus, Santa Claus. Okay, I'll put something in blue costume. Santa Claus in blue dress. We'll try Santa Claus in blue dress. That's what you can do in Delhi as well. See now the Santa Claus in blue dress. See this Santa Claus in a blue dress. Everyone, you can take a random photos in our event, and you can post it on LinkedIn. Tag us and our team. Tag IEEE CIS SBC GHRC. Is every pic we generate is free from copyright? Most probably yes. Sure, because it is a random pick and it is an AI generator, so there will no be a copyright as it is a public. Everyone can use it. You can see here. Huh. Now I think we should. ये तो अभी समझ गया ना मतलब you know now कि how to generate prompts in this as well. Ideogram you can use Delhi. Mid Journey one is paid. Mid Journey is paid. Now this is in a developing stage ideogram, so that is why you are not getting the always the desired output. But as it will proceed, as it will develop further, you will get more interesting outputs. We'll first start now with we'll start not start. We'll just look over this prompt PDF which is already shared. I think yes, which is already shared in Discord. So you can then access it. Now, okay. Now we'll do. See, now we'll ask. This is something interesting. I think we should go with this. See, now the scenario is like it has to if we have to ask GPT or any AI model to act as a character, we can do this. Like say act as a character from movie or book, anything. Character is Harry Potter. Series is Harry Potter. Character Darth Vader. Series is Star Wars, etc. Okay, we'll go with this. Character Harry Potter. Okay, we can ask him. I want you to act like a character. Control C. We'll go into GPT. We'll go into GPT. We'll put it, and now we'll act like character is Harry Potter, right? Series is series is series is series is Harry Potter series. Okay, Harry Potter
Yeah, is Harry Potter series. I want you to respond and answer like character using the tone, manner, and vocabulary. Character. Do not write any explanation. Only answer like character. Okay. You must know all the knowledge of character. My first sentence is hi. Okay. Okay. Hi, Harry Potter. Hmm. Now we'll put those two different characters in it. Another character, which is sorry, which is Darth Vader and Darth Vader from Star Wars. Okay. Vocabulary character Darth Vader and Darth Vader. Darth Vader. Okay. Okay, we can just proceed with this. Something will be generated. Hello, Harry Potter. See, this dialogue is taken. The force is strong with you. So if we give him information, if you want to act like Harry Potter from Harry Potter series, I want you to respond like Darth Vader from Star Wars series. I have missed out with Star Wars here, but if we add Star Wars, you will get a desired output. See, though I haven't added that, it has generated something like this. Hello, Harry Potter. As I have asked him to hi Harry Potter, and the force is strong with you. That is taken from the Harry Potter series. Right now, we are moving towards our end because we are almost done with everything. So if you have any questions, you can put it in the chat box or in the Discord servers. My team is there. You can try all this. I have shared something, a PDF, and this is you will get each and every scenario, almost each and every scenario here. If you have to ask GPT to interview yourself as a front end engineer or front end developer, sorry, so you can ask it as well. See, the interviewer is there, and then if you have to put it in the Excel sheet as well, you have to ask GPT to act as an Excel sheet. I want you to act as an text-based Excel. You'll only reply me text-based 10 rows Excel. It will give you all the data. You can just take it, copy it, and embed it in the Excel sheet. If you have to improve your English pronunciation, this prompt. There are basically these prompts are there. You can copy paste it, and don't always try to copy paste it and generate the output. Try adding some your flavors into it. As we have studied about that secret formula, you can always cross check that if everything is there, if every specific requirement according to you is there, else you can change it. So we are done with this. Now you can let me know if there are any questions. How do you, firstly, I would like to ask a question. How do you feel about that ideogram? You can tell. Now I think I would like to ask my team. I'm done with all my content right now because yes, we can, as we have seen this, we have done with it. Now you can, I will ask my team to, you can interact with the participants so that they can turn on their mic as well. We are towards the end. Sujal, can we proceed? Sujal, Rohit? Yes, we shall. Yes. We have attendees. We Okay, have so some like I have attendees. a question for all the participants here. तो like अभी हमारा सेशन अच्छा हुआ, हमने प्रॉम्प्ट बनाना सीखा, राइट? किसी ने ट्राई किया है कि चैट जीपीटी को ही पूछा है कि मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो? किसी ने ये चीज ट्राई की है? क्योंकि मैं तो बहुत करता हूँ, यस सर, मैंने किया था ट्राई। राइट? चैट जीपीटी को ही प्रॉम्प्ट पूछो एंड वही प्रॉम्प्ट फिर दूसरे टैब में यूज करता हूँ मैं फॉर जनरेटिंग टेक्स्ट, राइट? राइट, यस Exactly. Yeah.
एंड किसी ने कोई You should और be able to take your GPT. एंड किसी को लाइक वाइल एक्सप्लोरिंग किसी को कोई और टूल मिला हो, जैसे आज हमने आइडियोग्राम दिखाया, राइट, परपेक्सिलिटी दिखाया, किसी ने कोई और एआई टूल देखा हो जो ऐसे इंटरेस्टिंग हो, है ना, किसी ने कोई यूज किया तो वो शेयर कर सकते हो। तो जैसे कि तुम लोगों को मिड जर्नी पता होगा, मिड जर्नी इज पेड, राइट। मिड जर्नी का एक रिप्लेसमेंट आता है ब्लू विलो करके, डिस्कॉर्ड पे ही उसका बॉट आता है, ब्लू विलो नाम है उसका। इट इज लाइक एग्जैक्टली अ कॉपी ऑफ मिड जर्नी, जूलियस एआई। Julius AI for codes, writing codes. You can use that. जूलियस एआई, नाइस 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 नाइस, मैंने पहली बार सुना है। DALI is always there. DALI is there. Julius is there. Jasper.ai is Copilot is, you can see that extension is the VS Code. There is I would also like to share the tools list of tools, different AI tools with you. Later on after the session, I'll put it into the Discord server as well. It's new pieces. Yeah, there are thousands of AI tools now. You can Tejas, I think we should give a chance to Tejas to speak. I think he's putting it in the chat box from. Santa Claus. Those who are in the meeting till end, they will get a certificates as well as most active participants will try to give something to the most active participants. From the start of the event, I've always said be active. I'm done with my content, so we can, if anybody has any question, you can ask into the chat box, or you can just raise your hand so that our team can. Okay, so mic you. access has been enabled for everyone. So if you want to Yeah. talk, ask questions, share anything that you have, you can give, like, turn on your mic and do it. Roadmap for AI development, right? It will be shared. Okay, I have noted that it will be shared in the Discord. Like I said, we have like a set of 10 different PDFs and all, cheat sheets and all for you. How many of you guys have tried open source AIs? Anyone know about it? किसी को पता है open source AIs? नो, ओके, नहीं पता। तो जैसे तुमको अभी चैट जीपीटी दिखा, परप्लेक्सिटी दिखा, राइट, एंड जैसे आइडियोग्राम दिखा, ये सब जो है क्लोज सोर्स है। आइडियोग्राम का पीछे का बैकएंड का कोड क्या है किसी को नहीं पता, राइट, इट इज लाइक हिडन, क्योंकि अगर खुल गया तो सब बना लेंगे, राइट। सिमिलरली चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी तो चैट जीपीटी का ही बैकएंड यूज करता है, तो वो तो हिडन है। लेकिन कुछ ऐसे भी एआई टूल्स है जो कम्युनिटी ने बनाए हैं, जो कि बहुत लाइक फ्री है, फ्री टू यूज है। If I can share my screen, I'll show you guys. You can access a few of them. Okay, so is my screen visible? You guys have mic access, so you can talk, right? Okay, instead of chatting, it would be better if you Yes, guys yes. talk. Okay, it is visible. So if you go and search for Hugging Chat, so Hugging Face is like a what you can say, a dream place for AI developers, जहाँ पर आप अपने बनाए हुए मॉडल्स के बनाए हुए एप्स होस्ट कर सकते हो, मॉडल्स बना सकते हो, मॉडल्स होस्ट कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, लोग उसे यूज कर सकते हैं, राइट। इफ यू कैन गो टू हगिंग फेस, यू कैन क्रिएट योर अकाउंट हियर, है ना, द एआई कम्युनिटी बिल्डिंग द फ्यूचर, मॉडल्स है, डेटा सेट्स है, राइट। यू कैन सी टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वीडियो, सारे यहाँ पर ओपन सोर्स मॉडल्स मिल जाएंगे, and a few best of them are available on here, Hugging Chat. So you can see there are a few different models that are available over here. So if I click on this setting, you have
Meta's Llama, Code Llama, Falcon 180B. This is one of the most popular one. Mistral 7B, OpenChat, Mixtral 7B, right? You can simply select a model from here. So I'm currently using Falcon, and you can ask question to him. And since this is an open source, you can log in, you can use an API key and incorporate this AI into your own personal apps free of charge, right? Because not everyone can afford paying like $10 for ChatGPT. So you can use these models. Plus, since these are open source, you can actually customize them. If you have a personalized data set, for example, you have suppose an agrotech, like you have agriculture data, so you can fine tune these models based on that things as well. If you want to know more about these model, you can just like click on model page and you can come here, right? Falcon 180B chat has 180 billion parameters, right? You can see all which data set was used, how it was built, who built it, languages that supports English, German, Spanish, French, right? And you can just ask him like explain me about machine learning, right? And see it gives you. But these are open source models. You can actually like view its code over here. I can show you. And data set use. Think, but it is hosted over here. Files and versions. I have to log in. Okay. So these are some of the open source models, and you can use it, right? There are many more models listed over here. If I go to models, right? Text to image model, image to text models. We have one from Microsoft, Mistral, like there are n number, because there are multiple people down creating and uploading their models. So like if you want, you can explore this. I will be sharing the links of these in the Discord chat. Okay. Uh, now I would like if anyone wants to speak or have conversation, you can. Hello. Am I Yes, audible? Dipanshu. Yes, you are audible. Yeah. So my question was regarding there are many apps that we can make like we can through durable AI we can make websites, right? And we can also customize it to a lot of extent. So will there be for example, if I'm learning web development, so will there be any will I lose job if this AI tools come into in industry? Uh, may I share my take on this? Yeah, Yes. yeah. So Dipanshu, my take on this is I have already used this durable AI, and I have generated 2 to 3 websites for dummy purpose only for learning. So my take on this is if you are learning web development, you will not be completely replaced, because see, AI will take your ground level, all the jobs of ground level. If you are good at front end, if you know HTML, CSS, and JavaScript, obviously it is for sure that it is going to be replaced. But completely replacing the high end code into the frameworks at this stage is not yet possible. So you may learn that, because it is not always possible. See, simple example is that in durable AI, if you are creating a website, it will give you a website, but something will be there, any component or any header. If you would not like the header, if there is an orange color of header, and if you need that in the any type of pattern or a different color, so you can't give there a prompt, or you can't do actual code into that. That is what is important to look on when you are learning. You can learn. It is not like you will be completely replaced. Anybody from my team, if there, who can share any advice to Dipanshu, so welcome. What I feel is AI won't replace any fields in web development, because see, when if you do web development using HTML, CSS, and JavaScript, you know that
many things get redundant, right? You keep on doing same thing again and again with a slight change, right? Sometimes it is like a text change or a background change or a color change, right? So that's where AI comes in very handy, right? It can give you like expert suggestions, like we did, right? You can make it act like a senior developer kind of thing and ask him to give suggestions to you, right? Instead of you going asking your senior, you can add ChatGPT to increase your speed, right? So instead of fearing from ChatGPT, use it like your servant, right? Ask him to do things right for you, to like you so increase your speed. So it increases your speed to do things, right? Instead of thinking ChatGPT as above you, think as it is below you. Treat it like a servant and get things done faster. Okay, sure. Anyone has any more questions, or we can conclude our meeting? You all will get a certificate soon. Within few days, you will be mailed with your with a registered mail of yours. I see one comment from Tejas Nasre. So you are saying that open source contributions I know but never merge my request. Okay. So if you go on to my GitHub, right, or so I have like 50 plus projects of machine learning and 50 plus websites on my another GitHub. So I have like two GitHubs. If you want, you can contribute on that. We can work together. Like you can pin me on LinkedIn or somewhere. We can work together. We can help you build projects and you can help me add features on my projects as well, right? So you can look into that. Okay, now on to Bharat. I request Bharat to please take the meeting forward. Okay, so if anyone doesn't have any questions, so we can wrap the event. Does anyone have questions? You can proceed, Bharat. So, okay. So, what a captivating event it has been, exploring AI tools and prompt engineering. I would like to extend my gratitude to each one of you. Your active participation has contributed for the success of this event. And a heartfelt thank you to our esteemed speaker, Srishel Mumse, for sharing his expertise and introducing us to different AI tools. Once again, thank you for being part of this event. So, until we meet again, stay curious, stay inspired, and keep engineering the future. Thank you. Thank you very much for joining the event. Thank you very much.